जा रहा है, मेरा तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा दुख हुआ कि ये जो मॉर्निंग वाला मैच था अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच में, वो नहीं हो पाया बारिश के कारण। मतलब एक बार फिर से एक वॉश आउट हुआ, और आज का जो ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है फ्राइडे के दिन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। जो खबर आ रही है वहां से काफी डिसअपॉइंटिंग है, बारिश अभी वहां पड़ रही है। टॉस तो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होगा, और अब उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह से मैच हो जाए। बट कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। मेरे दो मित्र, मेरे दो दोस्त, मेरे गेस्ट बहुत ही जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे। द वेरी फनी सौरभ पंत, हु इज विद मी एवरी टाइम ऑन द शो, एज वेल एज मेरे एक और दोस्त पंकज अठावले, कमेंटेटर, आरजे, एंकर, जर्नलिस्ट। दे विल बी ऑन द शो। शो का नाम है T20 अड्डा, और इसी बात पे हम T20 अड्डा का प्रोमो लगाते हैं आप लोग के लिए। वेलकम बैक टू द शो माय फ्रेंड्स। वन मोर टाइम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये है T20 अड्डा। बंदे का नाम है जेमी ऑल्टर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सूत्रधार, आपका फेलो क्रिकेट प्रेमी, always here with you on Glance Live lock screen, bringing you all the latest fun from cricket. I love T20 अड्डा क्योंकि ये थोड़ा एक हटके शो है, जहां पे जैसे कि तीन यार, कभी कभी चार यार मिल बैठते हैं और क्रिकेट के गप्पे लगाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे दोस्तों जब आप भी, हमारे व्यूअर्स, हमारे साथी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक ठोकते हैं, इमोजीज भेजते हैं। इमोजीज की बात करें तो आय हाय कितने रंग बिरंगे हार्ट इमोजीज आ रहे हैं, पर्पल, रेड, ग्रीन। कीप सेंडिंग इन ग्रीन, येलो, कीप सेंडिंग इन पीपल। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आज के मैच को लेके, इस टूर्नामेंट को लेके, कल के मैच के बारे में, कल क्या मैच था दोस्तों। इंडिया वाला मैच तो ठीक ही था, लेकिन जो शाम का मैच था जिम्बाब्वे पाकिस्तान, what a thriller that was, and how that narrow one run win has thrown open that pool so wide. बहुत बहुत मजेदार ये है। कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। Aus.ly is saying, hi sir, hello, how are you, how are you? I'm very fine, how are you? Post some comments here, say hello to Sorabh Pant and Pankaj Athawale, मेरे गेस्ट जो अब आने वाले हैं। सबसे पहले पंकज अठावले, जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं तो मुझे मजा आता है, क्योंकि हम दोनों की जो गुफ्तगू होती है, हम दोनों का जो एक नोक झोंक तू तू मैं वाला है, इट्स ऑलवेज फन। आई हियर सम लाफ्टर, आई हियर सम लाफ्टर, इज दैट पंकज? Yeah, इट इज Jamie, there I पंकज। am. गुड टू सी यू, गुड टू सी यू सिटिंग ऑन योर स्टैंडिंग और सिटिंग जो भी है। आपको बता दूं कि पंकज अभी कुछ बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, पर ही इज मच मच बेटर, हेल एंड हार्टी, अ कपल केजीज डाउन। गुड टू सी यू माय फ्रेंड। A couple of kgs down, sometimes it feels very proud to be that way. लेकिन जेमी, एक मच्छर एक मच्छर आपको 4 किलो कम करवा सकता है, सो बी प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा पंकज ने। डेंगू बहुत फैल रहा है, आप सभी प्लीज सावधानी बरतिए। इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। ही स्माइलिंग, ही इज प्रोबब्ली नॉट हैड इट एज बैड एज मेनी अदर्स, बट चल नहीं रहा है नहीं दोस्तों। नहीं, वो कहते हैं ना, हम दोनों की त्वचा से हमारी उम्र का जैसे पता नहीं चलता, वैसे हम दोनों की हंसी से हमारे दुख दर्द का भी पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों को याद दिला दूं कि मैं और पंकज कितने शोज पे आ चुके हैं। ही इज वेरी ग्रेशियसली कम ऑन माय शो, ऑन ऑन ग्लांस। बट दो, एक वर्ल्ड कप और दो आईपीएल के साथ हम दोनों आपके साथ आए थे T20 अड्डा में। माहौल थोड़ा डिफरेंट था, उस समय हम लोग स्टूडियो में थे, बट नाउ वी आर हियर ऑन आवर लॉक स्क्रीन्स। और थर्ड गेस्ट, वेरी फनी, सौरभ पंत विल बी जॉइनिंग अस एनी सेकंड। बट पंकज, बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा बात करते हैं कल का सेकंड मैच। मतलब ये का हुई गवा। ये भीषण गंडगोल हुई गवा, बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये कैसा होता है ना, कई बार जेमी, थोड़ा हम फंसते हैं,
थोड़ा आप फिसलते हैं, यूं ही प्यार हो जाता है, कुछ ऐसे ही हुआ। आई मीन इट टर्न आउट टू बी समथिंग कि पाकिस्तान, आई थॉट दे वर कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज द पिच वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और मैंने सोचा था कि ये रन क्यों नहीं बन रहे, बट इट वाज नॉट रियली दैट इजी टू बैट ऑन। अच्छा, जिम्बाब्वे कह रहे कि हमें क्या, हमको तो मतलब लूटना है, चलो देखते हैं क्या करते हैं, जितना हो सके उतना। आई गेस पाकिस्तान वॉज कॉन्फिडेंट, बट वो थोड़ा सा वो गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, एंड दैट्स व्हाट T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यार। वहीं पर वो फंस गया, एंड दैट नवाज का विकेट, एंड नवाज वाज वेटिंग देयर टिल द एंड टू प्ले, एंड यू नो इट टर्न्ड आउट टू बी कि दोनों ने ही धमाल किया, एंड Zimbabwe turned out to be the winner. See, 1 run victory, Jamie, कितने कम होते हैं ना क्रिकेट में, we all cherish them, and this was one of them. एब्सोल्यूटली। यहाँ पे एक व्यूअर सुप्रिया मिश्रा कह रहे हैं कल का क्रिकेट मस्त रहा, पहला मैच मस्त रहा, बट दिस मैच आई मीन इट इज थ्रोन ओपन द टेबल, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड बेचारे मोहम्मद नवाज अभी क्या सोच रहे होंगे, पहला मैच उनकी बॉलिंग के कारण वो चोक हो गए, कल उनकी शॉट सिलेक्शन में। इसी बात को आगे ले जाने के लिए लेट्स ब्रिंग ऑन सौरभ पंत। आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ टोपी सौरभ इज वेयरिंग, आज किसको टोपी पहनाएंगे सौरभ पंत? Hi, I'm ready for today's match. I'm prepared. I did a lot of research. Good. I think it's raining in my house also. I told my children मेरे ऊपर थोड़ा पानी फेंक दो just to get the vibes of the place. होली है, होली है। और लोग बोलते हैं कि भाई घर के अंदर छतरी नहीं खोलनी चाहिए, बट जोक के लिए करनी पड़ेगी। तो आई हैव डन इट नाउ, आई हैव डन माय जोक, सो आई हैव शट। भाई देखो, मैंने आप दोनों को मैंने मैसेज किया है शो से पहले कि बारिश के चांसेस क्योंकि इतने हैं तो शायद क्रिकेट की बातें कम होंगी और थोड़े बॉलीवुड रेन डांस। तो क्योंकि सौरभ ने छतरी लेके आया, तो मैं शुरू करूंगा इस वेरी लो ग्रेड शो को। एक गाना था, छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे। आई नो पंकज रिमेंबर दिस सॉन्ग फॉर श्योर। एब्सोल्युटली, मेरे मन में जैसे ही सौरभ को मैंने वो छतरी में देखा, तो जेमी इट वाज बैकग्राउंड में टंग न टंग न नर डंग न डंग न नर डंग न डंग न नर हे साड़ी किसने हे। दिया है सौरभ? नहीं, हाँ, साड़ी का है। बट पर टू टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, मतलब ये तो हम लोग यूट्यूब पे वॉच अलोंग कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का कर लेते हैं, बिकॉज इट्स इंडिया मैच। और जैसे ही वो मैच हुआ और मैंने पहले 3-4 ओवर देखे जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के, आई वाज लाइक आई थिंक वी डिड नॉट वॉच अलोंग फॉर द रॉन्ग मैच, वी शुड हैव जस्ट वेटेड फॉर पाकिस्तान। और तो आई बीन वाचिंग द शो कॉल्ड द पवेलियन, ठीक है, व्हिच इज क्वाइट अ नाइस पाकिस्तान क्रिकेट शो, जहां वकार यूनुस सबसे सबके साथ बात करते रहते हैं। तो सबकी प्रिडिक्शन में नोबडी गिव अ चांस टू जिम्बाब्वे, एंड आई एम वाचिंग दैट एंड थिंकिंग टू माई सेल्फ कि भाई इंडिया में एग्जैक्टली यही सीन होता है। Nobody gives Zimbabwe a chance, even though 98 all out they've done. Pakistan they've beat Australia, they've beaten बांग्लादेश। पिछले मतलब एक साल में इन लोग ने सबको हराया इंडिया के अलावा, और इंडिया के भी काफी करीब हो गए थे वो दोनों ओडीआईज में। सो ग्रेट विन है। एंड देन सिकंदर राजा, आई डोंट नो इफ यू सॉ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिपोर्टर ने पूछा, हे व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर गोइंग टू विन, एंड ही सेड बिफोर द फर्स्ट बॉल। एंड आई एम लाइक, भाई ये तो बहुत ही थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया यार। लाइक यू शुड से लाइक ओवर 3.6 at least, like pretend not before the ball. बट यार एक बात बताओ सौरभ और पंकज, was this just Pakistan being Pakistan or was this the after effect of Virat Kohli and that match? क्योंकि जिस तरह से वो कल थोड़े जॉम्बी लाइक चल रहे थे, हमारी टीम भी पिछले साल की शाहीन के स्पेल के बाद we were also like a little lost। मतलब क्या क्या हुआ कल? नहीं, इफ यू आस्क मी, आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड, पाकिस्तान को बेसिकली वहां की सर्दियां पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक दिस, सो इट रियली टुक अ टोल ऑन देम, एंड ओवरऑल अगर देखें तो दे वर लाइक कभी कभी होता है ना, जिम्बाब्वे क्या इंडिया, मतलब इंडिया को हम हरा सकते हैं तो जिम्बाब्वे क्या है, कौन से खेत का बैंगन है टाइप, सो दे प्रोबेबली केम अप विद दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि नहीं हो जाएगा करके। मतलब जैसे हम खेलते हैं ना क्रिकेट में, तो जेमी, सौरभ, आप 50-50 मार के आओ, फिर मैं 25 मार दूंगा, आप 3 विकेट ले लो, मैं 2 विकेट ले लो, तो दैट सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक जॉम्बी हो गया था उनका, एंड आई थिंक दे जस्ट गॉट कॉट अप एंड दे कुडंट रियली कम अप विद सॉल्यूशंस व्हेन दे थॉट कि अरे अब तो गई भैंस पानी में, तो अब क्या करें, तो दे डिडंट रियलाइज व्हाट टू डू, एंड देन इट जस्ट कंटिन्यू टू लूज फ्रॉम दैट पॉइंट।
इट्स ऑल्सो लाइक जैसे अगर इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स भी देख रहे थे ना तो विराट कोहली को भी मतलब टू गेट सम लाइक आफ्टर स्कोरिंग दैट लाइक ग्रेटेस्ट टी20 नॉक ऑफ ऑल टाइम इवन ही वाज लाइक अरे यार एक और मैच खेलना है यार क्या है लाइक द एटीट्यूड वाज देयर एंड द ओनली डिफरेंस वाज कि नेदरलैंड्स इज नॉट एज गुड अ साइड एज जिम्बाब्वे तो आई थिंक पाकिस्तान और वो शुरुआत में जो उन लोग का स्टार्ट था We've lost Saurabh, he'll come back on. नहीं, बिल्कुल Yeah, yeah. सही बात था वो. Virat Kohli, after playing an innings like that, मतलब what it took Pankaj for him to score the, we saw आंख लाल थे, आंख में आंसू, pitch को punch मारा, everything that that man has had to endure on and off the field for the last 2.5 years. हाँ सौरभ, go on, you were saying. जब भी मैं ये ग्लांस स्टार्ट करता हूँ सडनली रैंडमली माय फोन इज लाइक हे शेड्यूल इंस्टॉल आई एम लाइक रुकना भाई लाइक और हर दिन उसको इंस्टॉल करने DLS. का नया अपडेट लाइक आई एम ऑन द Samsung S21 इट्स अ गुड फोन एंड ऑल बट एवरी डे इट वांट्स अ न्यू इंस्टॉल हमने कितना हैव यू नॉट फिनिश्ड द फोन येट और लाइक एवरी डे यू विल अपडेट इट सही But हाँ, सही तो I सही think I सही thought कि सही सही. Zimbabwe it was just that I think वो ऐसे मैच के बाद I mean it's like literally arguably the most high voltage match both teams would have ever been involved in. उसके बाद it's like I mean what do you do यार? So I felt a little bad for Pakistan and Zimbabwe was ready. और I think सिकंदर राजा पिछले 1 या 2 साल से यही बोलते आ रहे हैं अपनी टीम को कि हमें बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है and then when somebody asked him कि what did you think? Who do you think should bowl the 19th over? And he said any of us can do it. And so I think he's just uski wajah se he's literally he's become the Ben Stokes of Zimbabwe, where everybody looks at Sikandar Azad. So I would after this performance I would literally say कि Zimbabwe का chance है इस group में like if depending on how they deal with South Africa and how things go, I would put them as top 3 right now with regards to qualifying for the semi-final. I would go that far right now. That's a big that's a big statement and I'm on the same page. इनके पास ऐसे players हैं जो कल 150 तक इनको पहुंचना चाहिए था. You look at the shot that Sean Williams played. He looked so good for those 31 runs, but then he exposes the stump. उन्होंने reverse sweep किया शादाब को. अगर वो shot ना खेलते, सोचिए वो 50, 60 मारते हैं. So these things become very important the longer the tournament goes on. But we have to move on to आज का मैच जो है. पता नहीं मैच होगा नहीं होगा, हम तो अपने गप्पे लगाएंगे. I'm going to move into our first segment called Total Recall, where I will put you both on the spot. Saurabh is familiar with the drills. He knows that I have a good strike rate of getting the right graphics. Let's hope it continues. Yes. Did it. Good start. Good start, Jim. Good start, good start. तो पंकज, दिस इज कॉल्ड टोटल रिकॉल. वेरी वेरी क्विकली, आज का मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. आई विल बोथ आस्क यू either your earliest recollection of any match across any format इन दोनों टीम्स के बीच, या तो your strongest memory, maybe 2005 Ashes, I don't know, earliest or strongest. You start, Pankaj. I think you took the thing, 2005 Ashes वाला जो मैच था, that was, it of course उसके पहले भी कई सारे ऐसे मैचेस थे जो impactful थे, लेकिन ये वाला जो था ये एकदम जबरदस्त वाला था, because everything was happening out there in that entire series. और जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेला है ना, तभी भी कुछ ना कुछ लोचा हुआ ही है. रिमेंबर दैट, मतलब या तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या तो फिर इंग्लैंड की तरफ से. सो आई थिंक द एंटायर थिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, वी टॉक अबाउट द ट्रांस टास्मेनियन, but I think this is the original cricketing rivalry, if I may say so. But at 2005 Ashes, I think it turned around a lot for everyone around. At least for us, we're growing that time, and yes, it just stuck in your mind. Huh? मेरी तो एक मेमोरी थी और आई थिंक आई वाज वेरी यंग व्हेन दिस हैपेंड. आई थिंक माइक गैटिंग अटेम्प्टिंग अ रिवर्स स्वीप इन द सेमीफाइनल्स. पता नहीं ये क्यों, आई डोंट नो व्हाई दिस माय फर्स्ट. आई थिंक माय डैड वाज सो एंग्री. ही इज लाइक ये क्या कर रहा है तू. और उसके में रिवर्स स्वीप मारना was like also this thing. And also Mike Gaddick, or let's be honest, you didn't look at him and go like अरे ये तो अभी Olympic gold जीत के आ रहा है. मतलब he didn't seem the most athletic person, and for him to attempt that kind of shot unnecessarily, बस मतलब show off करने के लिए कि देखो मैं ये shot कि मैंने अभी invent किया है. Like you don't do lab testing of shots in a semi-final of a World Cup. Like there's no point of that. But I'll tell you my favorite England cricketer, I mean ये सब Ben Stokes और Flintoff वगैरह के पहले was a guy called Darren Gough. ओए होए होए. क्योंकि उस टाइम पे जब इंग्लैंड मतलब आई थिंक 10 साल के लिए वो लोग जीत ही नहीं रहे थे. एंड द ओनली पर्सन आई रिमेंबर असाइड फ्रॉम प्रॉब्ली एथरटन हु जस्ट स्टूड अप टू एवरीबॉडी वाज डैरन गफ.
और लाइक he had a little bit of weight but he was a great tryer. और जब मैं 14 साल का था, I was like about 88 kilos and I could bowl fast, and one of my inspiration was Darren Gough. तो मैं उनकी एक्शन करने की Wow. कोशिश करता था, Good where with the action. big jump and down like that. I forgot कि मैं इंडियन रोड्स में खेल रहा हूँ और 4 बार मेरा एंकल टूट गया because I landed in a pothole. So that's what Darren Gough has done to me. That's why he didn't grow in Bombay. Exactly, exactly. In fact, Jamie, one more point is, the way I remember this guy called Robin Smith, मूछे लंबी थी एकदम फिल हीरो साले बाल वाले, and the way he used to bat, he used to stand actually on the sixth leg stump, and when the bowler used to come in, वो एक ऐसा करके आता था, middle stump पे सटाक करके मारता था. I mean, that was also another very big impact player. Australian bowler कोई भी हो वो time पे, maybe Paul Rifle हो या फिर McDermott हो, I mean, that guy used to come like this and सटाक. I mean, that was again because a lot of new guys probably do not remember Robin Smith, but he was a hero, typical Hollywood hero, lambe ball, lovely I'll tell batting. you, ये दोनों रॉबिन स्मिथ और एलन लैम, दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू वॉच क्रिकेट अ बिट मोर, seriously 11-12 के बीच हाँ. में. दीज टू गाइस बोला यार ये खेलते हैं, वो तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि दोनों साउथ अफ्रीका से आए थे, तभी तो इनमें वो थोड़ा डेरिंग था, जिगरा था. It's all bonus. मतलब South Africa born England players are just a bonus. मतलब अगर South African players को England team से निकाल दो, like it's like I think there would be 30% less, like including Kevin Peterson and stuff. Yeah, no, it's a fascinating rivalry. और मुझे आज ही मालूम पड़ा कि these two teams played the first match in some 1780 something at the MCG, where आज they're going to be playing their 532nd match together. अगर जो बारिश ने हमारा साथ दिया, I try to be optimistic, but इस बार इस सुबह वाले मैच के बाद चांसेस बहुत बहुत कम है. But the show must go on. I'm going to briefly get into our next segment. This is called numbers game. मैं थोड़ा आप लोग के लिए एंड और व्यूअर्स के लिए जो आजकल के थोड़े आंकड़े हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, वो मैं आपको स्क्रीन पर लाता हूं बहुत जल्दी. Yeah, that was numbers game. Very, very quickly, more for our viewers. इस साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया have played 10 T20s. They won 10, lost 10, one tie and one no result. England have played 23. That's 13 more matches. Won 11, lost 11, no result, one. Record इतना कुछ खास नहीं है. Head to head overall, these two teams have met 23 times. It's 11 to England, 10 to Australia, 2 no results. The key stat is at World Cups, play 3, England 2, Australia 1. इस साल इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज हैं David Malan, 506 runs at a strike rate of 131.77. Most wickets, Sam Curran at economy 7.82. I think for a guy of his height and pace, that's a very good economy. Australia, most wickets, no surprise. Josh Hazelwood, 24 wicket, again, economy 7.44. For a guy who bowls 2 in the power play, 2 at the death, 7.44 is very, very good. Most runs, एरन फिंच. जो मैं ये स्टैट देख के, जैसे मैंने कल कहा था, मैं शॉक था कि मैं जब भी फिंच को देखते हैं इस साल, वो महेश थीक्षणा की बॉल पे स्टंप हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, but the guy's got 449 runs at a strike rate of 117.23. फाइनल स्टैट, बिकॉज आज का मैच एमसीजी में है, इंग्लैंड 4 बार यहां पे आ चुकी है T20 खेलने और चारों मैच ये हार चुकी है. आई वांट टू आस्क यू बोथ, 2 weeks ago, did you think कि सुपर 12 राउंड्स के 6 दिन के अंदर ऐसा क्वार्टर फाइनल होगा इन दोनों टॉप टीम्स के बीच में? आई एम वेरी सरप्राइज्ड. And I'm quite surprised in the sense rain was going to play its part, Jamie and Saurabh. मतलब बारिश, एक तो आप वहां पर ऑस्ट्रेलिया वाला हमारा फ्रेंड बोलता है कि ये क्या, ये ठंडी में बारिश कराते हैं, इधर क्रिकेट खेलने को आता है, इधर हमको फुटबॉल खेलने को टाइम नहीं है, so it is really strange that it's happening at this time of the year. But the fact is, do you realize that both these teams have come in with such different backgrounds, and ऑस्ट्रेलिया इतना मतलब तगड़ा लगने के बावजूद भी वो खेल नहीं पा रही है ठीक से, और इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि वो, अरे सौरभ जेमी चलना यार, जल्दी से मैच खेलते हैं, चलना यार, इतना उनका बिजी शेड्यूल रहा है, एंड दे हैव कम टुगेदर, बट दे लुक अ बिट मोर फॉर्मिडेबल फॉर मी देन ऑस्ट्रेलिया इन दिस करंट सिनेरियो. और ये वैसे अब यू टॉक अबाउट एरन फिंच, राइट? तो अभी मैंने हाइलाइट्स देखी श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और मैंने वो प्रथम निशंका का जो नॉक देखा, वो लाइक वाओ, व्हाट अ टेरिबल नॉक दैट वाज, 41 और 48 और व्हाटएवर इन लाइक इन अ T20 मैच. यू लाइक ये बहुत ही घटिया नॉक था, एंड ही एटलीस्ट गॉट अ ट्राई.
And then Aaron Finch played a even worse knock. I was like, why? He admitted also. You need to have your run rate like way. You तुम 100 रन से हार के आए हो. You can't be batting at 31 or 42. So like I think Stoinis just literally saved them. Yeah, मतलब with that like it required Stoinis to hit the fastest 50 ever hit by Australian to help them. So Aaron Finch on overall strike rate like 117 is pretty terrible. But I think जैसे South Africa is owed a debt of thanks to England, right? Because England की team South African के इतने सारे players हैं. I think the same way England owes like thanks to MS Dhoni. बिकॉज टू ऑफ देयर एक तो उनके इनका डेथ बॉलर सैम करन तब उसी टाइम पे डिस्कवर हुआ था जब धोनी ने बोला भाई तू डेथ में डाल मोइन अली इंग्लैंड इज लाइक इसको खेलना ही नहीं आता हमें हम मालूम नहीं लाइक ही टेक्स 23 विकेट्स अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट सीरीज एंड देन Yeah. लाइक तू खेल ही मत I'm like भाई वो 22 विकेट लिया तुम लोग पागल हो गया लाइक इन नो Exactly. अदर He won टीम इन more वर्ल्ड matches. क्रिकेट. Yeah, they would. Moeen Ali have played the less amount of matches that he's played, and when he gets angry with Alistair Cook in that one whatever जो उनका interview चल रहा था, you are like, भाई, this is deserved, man. I mean, you had a guy, you could have had Ben Stokes and Moeen Ali in the side for every single format for the last 8 years, and you Yep. didn't. So yeah. And the same thing, Saurabh, Australia also, Josh Hazelwood was virtually not being picked in T20s. MS Dhoni ने CSK में क्या उसको बॉलर दिलाया था? A month apart, the guy bowled so well in two finals. I think we were talking about this last year, Pankaj also. तो धोनी का Absolutely. बहुत बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है. Let's now look at this matchup. I agree, probably Australia to some level looking a little weak, but जो ताज्जुब की बात है दोस्तों मेरे लिए was the visuals of the Ireland England match and जायंट स्क्रीन पे डीएलएस का जो वो है वो फ्लैश हो रहा है और बटलर इन द ड्रेसिंग रूम एंड मोइन एंड लियम लिम्सन ऑन द ग्राउंड they look clueless like this is peak Mark Boucher Lance Klusner from 2003 that sort of sums up how confused this arguably the strongest batting lineup was so confused that it चल क्या रहा है भाई नहीं, नहीं होता है देखिए आपको इस बात को भी तो समझना होगा ना कि देखो घर में इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा-सा बैक ऑफ द पॉइंट रहता है ना कि कौन पीएम बनेगा, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, मेरा वीज़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड इंग्लैंड गाइस आई विल टेल यू दे आर रियली फनी। दे बिहेव उनका फेस शिफ्ट होता है मन का हर मैच के साथ। अगर इंडिया के साथ खेल रहे हैं तो वो अलग सोर्स लेकर आते हैं। आयरलैंड के साथ ये तो हमारे बाजू में है, हम तो आराम से खेल लेगा। ऑस्ट्रेलिया ओहो हो ऑस्ट्रेलिया सो दे कम विद डिफरेंट माइंडसेट इन एवरी मैच सो वी रियली कैनॉट say kind of they have a consistent thought process तो ये चलता रहता है अभी क्या करें Yeah, but it's also like interesting you think about it, I think we discussed this पिछली बार also कि मतलब ये Duckworth Lewis turn is like that's the one time where I'm like just allow them gadgets like you're not allowed to have नहीं a नहीं phone नहीं and नहीं नहीं I will object because it is against the mathematicians and the statisticians of the world अरे जो भी है वो all. नहीं नहीं अच्छा बनाया है अब वो हम हाँ. समझ नहीं पा रहे तो मतलब वो हमारे दिक्कत होती है गलती देखिए गैजेट से ना But I think मेरे को बहुत this is a तकलीफ है great सी आई opportunity एम for एन Indian इंजीनियर आई mathematicians. अंडरस्टैंड गैजेट्स वो गैजेट से मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो आपको अंपायर पे विश्वास रखना नहीं है ठीक है इसके लिए तुम वो मशीन लेकर आते हो वो मशीन को समझ में नहीं आता बोलते अंपायर जो बोलते हैं वही ठीक है तो बेचारे अंपायर पे विश्वास रखो ना तो आई मीन दैट्स माय थॉट प्रोसेस One part of me is like it was much simpler when South Africa got out of the 1992 World Cup. Where they're like 22-7, they're like, हाँ चल हट 22-1 हट निकल यहाँ से 22 रन मेरा एक बॉल में कैसे करेगा तू? is Like it's like I wish that happens. By the way, there's an inspection set for 1 hour from हाँ now. तो ये मैच तो टाइम पे चालू नहीं होने वाला है. It seems like it's pretty इसी much going बात to be पे the end of it. इसी बात पे I'm gonna put up our first poll for our viewers आपके पास 20 सेकंड है इस पोल का जवाब देने अपने लॉक स्क्रीन में will rain have a say today yes or no it's a doozy it will have a say पर जब तक हमारे viewers अपने अपने वोट देते हैं I want to draw your attention दोस्तों to this guy on a screen Ben Stokes doesn't need an introduction don't need to talk about his talent but ये कुछ 1.5 साल तक ये इंग्लैंड की T20 स्क्वाड में नहीं थे फिर ये वापस आए थे फिर ये दोबारा बाहर गए थे is he becoming something of a liability? Is he playing on reputation at number 4? Because in a different scenario, Johnny Bairstow अगर golf खेलने नहीं जाते तो वो 4 पे खेलते I just think despite his outrageous talent ये थोड़े से misfit है नंबर 4 पे इस T20 lineup में your views on that Interesting. See, Jamie and Saurabh, don't you think that cricket is a game of characters,
and every player cannot actually behave the same way, and we actually expect that to happen. तो ये थोड़ा सा ना ये इंटरेस्टिंग किस्म का आदमी है कि भाई आज अगर मैं मेरा मूड है तो मैं तीन मतलब एक टेस्ट भी खेलूंगा, उसके दिन अगले दिन वनडे भी खेलूंगा, और मैं उसके अगले दिन दो T20 भी खेलूंगा, दैट्स, और आज मेरा मूड नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यू नो, समथिंग लाइक एन प्रॉब्लम AB डिविलियर्स. सो समटाइम्स हमारी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. वी आर नॉट रेडी टू लीव पीपल जस्ट लाइक दैट, एंड आई थिंक बेन स्टोक्स इज वन दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हु नीड्स टू बी, अच्छा आज इंटरेस्ट है खेलेगा आजा, नहीं अच्छा मत आ, नो वी नीड टू गिव हिम दैट, ओनली देन वी कैन एक्चुअली सी द बेस्ट आउट ऑफ हिम. आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव सीन हिम ओवर द years, you know. It's very moody and it's very natural actually. सौरभ, Like I think it comes to KL Rahul. Like my point here is कि अभी कल सब लोग बोल रहे हैं कि KL has become Bahuma and all that kind of stuff. Even though अगर आप उनके मतलब previous stats पढ़ लो, it's vastly different. Like Indian fans really need to calm down and do some research. मतलब it's literally you can एक cricket info में जाकर तुम search कर दो तुम्हें पता चल जाएगा कि he's hit 450s in his last 7 matches. What are you talking about? बिल्कुल Comparing him to a बिल्कुल। guy who single digit scores. So, but the difference between I think लोगों का गुस्सा केएल राहुल की तरफ इस तरफ आते इसलिए आता है because even from the IPL to international cricket, there are very few times he's actually won India a match from a completely untenable position, right? और एंड में तुम्हें वही like विराट कोहली the whole reason कि अभी ये पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ, the reason why किंग कोहली वगैरह वापस चालू हो गया because he's done this so often. और तुम्हें हर साइड में एक कोई ऐसा बंदा चाहिए जो तुम्हें कहीं से भी मैच जिता लेगा. And I think for England it is Ben Stokes where they are like भाई unlikely position से या तो बॉल के साथ या बैट के साथ he'll do it. I do think कि थोड़ा बहुत like and number 4 I mean again you can थोड़ा take your time with it. Like my favorite cricketer, I think the most impactful New Zealand cricketer is Kane Williamson. Because he bats so slowly that you are like out ही मत करो ना, just like let him bat करते रहो, मतलब let him do 108 strike rate. I think तो हर टीम के अंदर एक कोई ऐसा प्लेयर है भाई लाइक कहाँ खेल दो उसको. केन विलियमसन फॉर दिस वन, एरन फिंच फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का बबूमा, नॉट केएल राहुल एनीमोर, बट आई थिंक दैट्स द रीजन यू प्ले वही प्ले तो। प्ले बेन स्टोक्स इज फॉर दैट. कल कल अपने पहले ओवर में जब तस्कीन अहमद ने उसको आउट किया बबूमा को, उसने ऐसा सेलिब्रेट किया जैसे उसने विराट कोहली को आउट किया। मैं बोला अबे हीरो, इसको रख क्रीज पे। व्हाट हैपेंड, रूसो केम एंड स्लैम्ड यू, नो? या नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्लेयर हर टस्किन टीम ऐसे में ही करता है. ऑलमोस्ट है। अरे टस्किन ना लोकल क्रिकेट में भी ऐसे ही करता है, आउट करेगा तो भी ओ तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो कल मैं तन्मय के साथ एक कुछ तन्मय भट्ट के साथ भी डूइंग यूट्यूब लाइव मीम थिंग, हाँ, और हमने वो वीडियो देखा जिसमें हसन अली बूम वो वाला करता है एंड ही गेट्स अ थिंग हियर and I'm like dude, like every time I've seen that celebration of his for 2 years and each time I see it I'm like भाई तू अपने आप को इंजर करने वाला है, he did it. And sometimes it's about these kind of things, right? And again you know people talk about Taskin Ahmed versus Bahuma. ये अभी मॉडर्न क्रिकेट में ये सब अरे एनालिसिस चालू है, मैचअप्स चालू है. Again you're absolutely right, the matchup would be to never get Bahuma out. Like करेक्ट। just खेलने दो बच्चे को, एग्जैक्टली enjoy करो. एग्जैक्टली. अरे हम लोग करते ना ये अपने वीकेंड मैचेस में हर सैटरडे। लाइक आई एम वेरी लाइक आई गेट इन द गाइस फेस, मैं खड़ा हूं स्लिप पे या यू नो शॉर्ट फाइन पे, अरे इसको रखना स्ट्राइक पे, एंड इट्स अ टैक्टिक। द गाय लुक्स ऑन, ये कौन बोला, अच्छा गोरा बोला, अच्छा मैं पता नहीं क्या बोला इसको। ये होता है बहुत बार यार, बट एवरी टीम हैज दैट वन गाय। एंड यस, कहां क्लब क्रिकेट दिल्ली में और कहां वर्ल्ड कप, पर लॉजिक है भाई। द मोमेंट दे गॉट दैट विकेट, हु केम इन, द गाय हु चेंज्ड द मैच फॉर यू। एब्सोल्युटली. लेकिन अब क्या करें, देखिए वर्ल्ड कप है, मंच मिलता है तो सेलिब्रेट करना पड़ता है, फोटो भी खींचती है तो तुरंत ही बिल्कुल, सेलिब्रेशन के बाद लोग देखते हैं, यू नो, अच्छा मेरा आया करेक्ट। कि नहीं, आया कि नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक से आया ना, ओके ओके ठीक से आया. I'm going to put up a next poll for our viewers here. Viewers, आपके पास 20 सेकंड है इस पोल का जवाब देने. Is Ben Stokes the weak link at number 4? Until these guys come in. But again, guys, अगर हम पेपर पे देखें, and we know कि what's written on paper does not necessarily mean कि आप ट्रॉफी जीतोगे, पर इंग्लैंड की क्या बैटिंग है. But in consecutive matches, that batting to number 10 has been put under pressure against Afghanistan. और आप ये देखिए, अगर मोइन उस दिन आके 6 और 2 4 नहीं लगाते हैं, तो क्या पता, it could be really worse for them. What is this a case of a team just loaded with power, not sure what's happening on the biggest stage? So they have no business slipping to 90 for 5. Yeah, this team, मेरे हिसाब से. Then it happens. I think, you know, the overall situation with the big grounds in Australia, the current, probably the environment, you know, the kind of the weather,
एंड स्टफ लाइक दैट, और इतने दूर से आए हैं वो वीजा वीजा वो करवा के आई थिंक स्टिल अ लॉट ऑफ टीम्स आर नॉट रियली कंप्लीटली इन दैट फुल थ्रॉटल मोड, मेरे को ऐसा लगता है। और इंग्लैंड वो एक टीम है ना कि वो थोड़ा थोड़ा उनका इंजन ना पुराना टाइम का गाड़ी है ना, वो थोड़ा इंजन टाइम लगता है गर्म होने के लिए, बट एक बार इंजन गर्मा गया ना तो फिर ये किसको छोड़ेंगे नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मैचेस टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, सो प्रोबब्ली दैट इज आल्सो थिंकिंग, दे आर आल्सो थिंकिंग कि हाँ चलो यार हो जाएगा, लेकिन हारना नहीं, जो भी करना खेलो ट्राई करो, हारना नहीं। प्रोबब्ली दैट माइट बी द केस विद मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स, एंड प्रोबब्ली इंडिया इज आल्सो नाउ अगेंस्ट नेदरलैंड्स आल्सो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो ये इनिशियल टाइम में ऐसा होगा, जैसे जैसे ये अक्टूबर का महीना खत्म होगा ना, फिर देखो दोस्तों फिर कैसा एकदम सीरियस अलग मजा आएगा। अब देखिए जिम्बाब्वे डिड नॉट एक्सपोज ब्रैड एवंस इन दी क्वालिफायर्स, they got him in the super 12, so सब कुछ चल रहा है पीछे वर्ल्ड कप में। सही बात है ये। बस थोड़ा हाउ डू यू सी दिस ग्रुप, बिकॉज न्यूजीलैंड और अ टीम व्हिच मोस्ट ऑफ द वुड से हाँ क्योंकि ये ग्लोबल टूर्नामेंट है इनको हम डालते हैं, बट परहैप्स नॉट एवरीवन्स नेम टू बी टॉप ऑफ द ग्रुप, यू नो, आफ्टर वन मैच. There, Australia and England have each lost one. They're struggling. We've seen some other teams who come. How do you see this group shaping up? Because this was the tougher group even before a ball was bowled. But बहुत उतार चढ़ाव हुआ है सौरभ इस ग्रुप में. मतलब अभी मैं टेबल देख रहा हूँ तो तीन ये अभी आयरलैंड ने 3 मैचेस खेले हैं अभी तक, अब Right. मतलब एक तो विन आउट हो गया, दे आर सेकंड राइट नाउ करंटली ऑन द Correct. बेसिस ऑफ यस, करंट फॉर्म। और अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ये मैच हो जाएगा तो बेसिकली आई थिंक आयरलैंड नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ नेट रन रेट एंड इंग्लैंड विल गो टू नंबर 2। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एंड में न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई प्रेटी कन्वीनियंटली, आई डोंट थिंक दे आर अ वेरी गुड साइड। मतलब डेविन कॉनवे तो अकेले उनका थोड़ा सूर्य कुमार यादव है तो वो कर He is लेगा ill. अपना जो भी है। I think New Zealand will qualify, and then it's essentially it seems like it's going to be between England and Sri Lanka. I don't think Ireland अभी एक और कोई upset कर पाएगा, but yeah, it's an interesting group. You know what I find very interesting about this thing? Like every time I think about players like openers batting till like 16 overs with a strike rate under 100 or 110, I'm like तुम किसके लिए खेल रहे हो? Like, are you बिल्कुल सही playing for बात. yourself or the team? Because I remember that, remember the Rahul Dravid in the IPL, right? जब वो he realized कि अच्छा I'm a little misfitted here, तो पहले 6 ओवर में मैं जितना over the top मार सकता हूँ, then I'll just get out. I will try and get out in the pursuit of runs, right? ऑस्ट्रेलिया, द फैक्ट कि टिम डेविड ने इतनी कम बैटिंग की है अभी तक इज अ शेम, राइट? लाइक यू हैव टिम डेविड एग्जैक्टली। इन योर साइड, you have Matthew Vadepav, you have all these people, if they've still not played, why? I don't understand कि मतलब तुम्हें नेट रन रेट के साथ भी खेलना है, so I find sometimes ये these बात है. tactics very stupid. Like Australia's figured out the tactic कि hey ओवर रेट को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टेशन करेंगे अपने फील्डर्स वहां पर ताकि जल्दी से बॉल वापस आ जाए, बट they can't think of this tactic which is that you can't have a player batting at 86 strike rate when you lost by 100 runs. I find it amazing. No, and just to pick up on this part, I know that day Conway batted phenomenally. He batted, but my point is 20 ओवर खेल के 89 नॉट आउट मेरे लिए फंडामेंटली ये प्रॉब्लमैटिक है. उस दिन वो चल गया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वर अबिस्मल. बट रेयर इज द डे जेंटलमैन जब कोई ओपनर 20 ओवर खेल के टीम का स्कोर 200 पार हो और एक ओपनर 89 नॉट आउट रहने के बाद ends up on the winning side. Hats off to him that day, but I think if you're batting 20 overs, आपको minimum 120 तो बनाना चाहिए in because this nature of the game is so fickle. I think Rally Russo has done that really very well, and I think Rally He's Russo जो जिस तरीके से सेंचुरी लगाई उन्होंने, और and he got this whole knack when he was in India in that particular couple of games that he played. He suddenly picked it up from there, and he's been hammering. और Rally Russo का नसीब इतना खराब है कि उसके पास साउथ अफ्रीका में बाकी अच्छे प्लेयर नहीं है. अगर रैली रूसो के साथ कुछ और दो चार होते ना तो दिस साउथ अफ्रीकन साइड वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डेंजरस. अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या, यू आर राइट एंड सौरभ आल्सो सेड दैट कि ये क्या हो रहा है मतलब, और आर दे ब्लफिंग? देखो भैया, ये मजेदार बात है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या वो ब्लफ कर रहे हैं और बाद में अचानक से स्टॉइनिस भी चल पड़ेगा, स्टीव स्मिथ भी चल पड़ेगा, कैमरून भी चल पड़ेगा, सब चल पड़ेगा. इट कैन बी रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दीज गाइज आर स्मार्ट. Talking of impactful players, let's move into our next section, the fantasy section, sponsored by High Score, one of my favorite times क्योंकि मैं तो एक fantasy का बहुत बड़ा कीड़ा है मुझे. High Score presents fantasy section. Saurabh, you know the drill. You have to pick three players
आइदर साइड जो भी है, 3 प्लेयर्स जो हमारे फैंटेसी एंथुसियास्ट के लिए शायद बारिश के कारण भी गिव देम द मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स। I'll start with you, Saurabh, since you know the drill. So I think my first choice would be Anu Malik's Dekho Barish Ho Rahi Hai. That's the first player I think that'll do well. Second, I think Ravina Tandon and Tip Tip Barsa Pani. I think that's a good choice. And third, I would say Winsheater. I think those are the three. Those are the three favorite players because I don't think match होने वाला है. पर अगर हुआ तो it's England versus Australia. I'll say Moeen Ali because Moeen Ali all-rounder है तो कुछ ना कुछ तो हमेशा कर ही देते हैं वो and I'm gonna say you know what just to mess things up I'm gonna say Aaron Finch ऐसे टाइम पास के लिए Aaron Finch अगर अगर एरन फिंच के पास दिमाग है और शॉर्टन मैच हो, वो बैटिंग ना करें। He and Bahuma need to be there, but just come to the toss and not do anything. कोई फायदा नहीं होगा उनके खेलने से। But it's the Darren Sammy thing, no? I was just going through stats of captains, right? And I thought कि पिछले like last time Aaron Finch ने अच्छा नहीं किया, Owen Morgan ने अच्छा नहीं किया, and then they made difference. But Darren Sammy is the king of this, यार. मतलब I was shocked by the stats. He scored 6 runs in the whole World Cup. He दो बार scored 6 सिक्सा। runs to 1 wicket. like ये क्या है? This is the ultimate captaincy. Where he's like तुम लोग कर लो, मैं बस यहाँ मैं press conference देता है, तुम लोग कर लो. So that's your pick. Pankaj, team player most impactful. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टॉइनिस है, एक तो मैक्सवेल है, ये दोनों तो गड़बड़ घोटाला करेंगे। इनफैक्ट इस तरफ अगर हम देखें तो प्रोबेबली मोइन अली इज वन ऑफ द थिंग्स, बट आई एम लुकिंग एट जॉस बटलर। मतलब उसकी फटकेबाजी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े पिचेस पे देखने का जो एक मतलब वो एक होता है ना, ये बार बार नहीं मैं देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का वीजा ये लोग देते नहीं बराबर से टाइम पे, तो फिर वो हमको सिर्फ इंडिया में वो मारते हुए दिखता है। नो, वी नीड टू सी बिगर ग्राउंड्स, टन टनाटन, एंड ऑफ कोर्स लियम लिविंगस्टन। सो ये एक है। बॉलर्स अगर मैं एक एक पिकअप करूं तो आई थिंक आई डोंट नो, सैम करन ऑफ कोर्स इज डूइंग प्रीटी वेल, और जैम्पा साहब अगर आप अभी वो ठीक होके आए हैं, वो कुछ कर दे तो फिर, बिकॉज इंग्लैंड तो वैसे भी ताता थई या करते रहते हैं ऑन द पिच। इंग्लैंड जैसी कोई भी पेल स्किन ब्लॉन्ड लेग स्पिन डालता है, इनके वैसे ही मौसम खराब हो जाता है। तो जब उस तेज में हाय मौसम हाय खराब हुए, हाय। तो Zampa, like you, Pankaj, is also just coming off a bit of a bout of illness. तो बात सही है। But you know the Joss Butler factor, because whenever he's playing, be it Rajasthan Royals, be it the 100 England, and I'm playing fantasy, by default मेरा उंगली जाता है उस बटन पे टू मेक हिम कैप्टन, बिकॉज द चांसेस ऑफ हिम डूइंग इट। और यार लास्ट T20 वर्ल्ड कप, पंकज, जब हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, ही गॉट एन आउटस्टैंडिंग 100 अगेंस्ट श्रीलंका, ही वाज माय एग्जैक्टली। कैप्टन all 4 times this IPL he got hundreds. He was my captain. So just the risk of not having him as your captain or vice captain and him scoring runs, it's too much. But last match में शायद पहली बॉल या दूसरी बॉल पे आउट हुए वो। Even Sam Curran, given the fact that he bowls at the death, he was my vice captain in that first match when he got 5 wickets. तो अगर आप में से कोई फैंटेसी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं या व्यूअर्स हैं, take my thing, go for Butler and go for Curran, because you never know. But like Saurabh said, tip tip barsa pani, ala re paus ala, match hoga, we don't know. The show must go on. Pankaj, एक क्विज सेक्शन आने वाला है अभी। जी। सौरभ तो बहुत बहुत बार इस पे शामिल हो चुके हैं। लेट मी मूव क्विकली इनटू द क्विज, बिकॉज फ्रैंकली लाइक सौरभ सेड, मैच तो मुश्किल ही है। व्यूअर्स, ये आपके लिए है। मैं सवाल अपने गेस्ट से पूछूंगा, व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में डालूंगा। चलिए, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर बेस्ट फिगर्स फॉर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? वन सेकंड, let me get it up for you now. Is it Shane Watson? Sorry, Australia versus England. Is it Shane Watson or Josh Hazelwood, owner of the best figures for Australia versus England in a T20 match? Is it Shane Watson or Josh Hazelwood? ये इंटरेस्टिंग सवाल है यार। कोशिश हाँ करता हूं मैं। हाँ हाँ। आई थिंक 6 विकेट ही होगा ना किसी का, मतलब बेस्ट फिगर्स तो इट हैज टू बी 6 विकेट्स होगी आई अज्यूम, और मे बी नॉट। I'll say Josh Hazelwood. वैसे भी अभी वो रैंकिंग्स में तो ICC T20 नंबर 1 बॉलर है, so he should have some due respect. Okay, you're going, Pankaj? Yeah, I'll go with Saurabh. I was also coming to Josh Hazelwood.
हमारे व्यूज भी कह रहे हैं 59% जॉश हेजलवुड और 41% कह रहे हैं शेन वॉटसन। अब सभी गलत हो। शेन वॉटसन ने 2011 में 4 फॉर 15 लिया था। अरे हेजलवुड है for वॉटसन साहब 20। सॉरी। Watson sir, for a time of 2011 was like peak Shane Watson, so I'm not surprised. He hardly या bowled the last 5-7 years. It's actually Shane Watson 4-4-15. Second question, the same thing from an England perspective. Who has the best figures for England versus Australia? Is it Chris Jordan or John Lewis? If you remember John Lewis, hats off to you there also. ओ जॉन लुइस, ओ राइट राइट राइट। जॉन लुइस यार, वो तो उसने तो आई थिंक क्या 2.5 मैच खेले थे कुछ, आई रिमेम्बर। एग्जैक्टली शायद एग्जैक्ट। शायद ये गूगली है जेमी। हाँ ये है हाँ। व्यूअर्स ने अच्छा कहा 55% क्रिस जॉर्डन, 46 54 to Jordan, 46 to Lewis. What are our esteemed guests saying today? जॉनी इंग्लिश नहीं, क्या जॉश, क्या नाम उसका? John Lewis. हाँ वही लुइस लुइस, चलो Not लुइस। Josh English, but हाँ, John Lewis. हाँ. इंग्लिश इंग्लिश। Okay. Gaurav, आई से क्रिस जॉर्डन। it is John Lewis, 4 for 24 in क्या 2005. 2005. In his मेरे को लगा first match. ये गूगली है, ये मैंने देखा था, हाँ, मतलब नहीं वो देखो, जो जॉन लुइस पंकज मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ये स्टैट गुरु से आया जॉन लुइस। नहीं, उसका इसकी मैंने रिस्ट देख ली थी बैटिंग करते समय, ये कुछ कर रहा था ऐसा, तो मैंने कहा गूगली डालेगा ये। नहीं मैंने सोचा कि पहला वाला गूगली था तो दूसरा वाला तो गूगली नहीं होगा ना। you're And not Chris Jordan has played for donkey's years, so you expect him to do it, na? But it's you're not actually destroying। John Lewis. नहीं नहीं, चलिए लेकिन ये नेक्स्ट आजकल क्वेश्चन। ट्रेंड है ना सौरभ, ये भी पता है ना, आजकल के लेग स्पिनर्स कभी कभार लेग स्पिन डालते हैं, बाकी तो वो गूगली डालते वही हैं। तो by the way, next question, let's try an experiment, okay? You will ask the question and let's take a guess before the options come in, because Okay. like there is ओहो no way anybody would guess ki John Lewis, like I wouldn't even give him as an option, or Chris Jordan, ठीक है, professional fielder I Chris have Jordan, put I would not even I have think. put the question for our viewers. I'll ask you in a slightly different way. Aaron Finch smashed Australia's highest individual T20 score when Australia faced England at Southampton in 2013. How many did he score? Is it 156 or 172? It is a T20 156। match। Yes. 156 ही होगा, 2013. 156 ही होगा, 172 तो seems very like 156 हाँ or 172? Viewers I'll have say said 56% have said 156 and 44 have gone with 172. Saurabh is saying 156. ठीक है? it should be 156। You are all right. He got 156 off 63 balls. But 5 years later against Zimbabwe, he outdid himself and Finch got 172. what? But the first highest score for क्या any मारा है यार। was actually 156, which this man then broke with 172 against Zimbabwe. तो मेंस T20 में तो ये हाई स्कोर होगा ना फिर 172। Yeah. First, it वाओ। was 156 by Finch. Then he broke his own record about 4.5 years later. Okay, next question. Aaron Finch has the most T20 runs for Australia versus England. But tell me which batsman is at number 2? Is it Cameron White, Googly, or is it Glenn Maxwell? पहला क्या था, कैमरून? कैमरन Cameron राइट। White or Glenn कैमरून वाइट, Maxwell? हाँ। Second most runs for Australia after Finch versus England. कैमरन वाइट और ओह ग्लेन मैक्सवेल। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज कैमरून वाइट का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, और बट बहुत खेला वो एक टाइम पे। कैमरून वाइट चलो। Okay, 49% has said White, 51 are saying Maxwell. Saurabh, I'll go with 51%, I'll say Maxwell। the right answer is actually Maxwell, but only by 10 runs. ओह 315 to Maxwell, 305 Cameron White ने बनाए थे. He's sort of that वाओ। forgotten. He's one of those, the next Shane Warne that came up, but he actually was pretty good in the T20 format, और खासकर यस। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 305 रन मारे. आखिरी सवाल सभी के लिए,
Which England bowler once got hammered for 68 runs, the most ever between these two teams in a T20I? Was it James Anderson or Stuart Broad? Oh. या एंड में पिटाई की Stuart बात करेगा Broad. तो ब्रॉड ही होगा ना लाइक डू यू थिंक Stuart Broad. एनी बुमराह's favorite bowler युवराज's favorite bowler Yuvraj. they're all I'm gonna say broad Me, Siraj. हाँ I'm gonna say broad Okay, पंकज, Broad, Stuart Broad. हमारे व्यूअर्स इस बार कह रहे हैं 57% जेम्स एंडरसन, और इस बार व्यूअर्स बिल्कुल सही है। जेम्स एंडरसन हैं? 2007 में ही took 1 for 68 in 4, most expensive. so him Broad went deciding Oh, to play test cricket 69. was not a choice he was like मैं टेस्ट क्रिकेट पे ही ध्यान रखूंगा फिर they're like नहीं तू रख नहीं चाहिए This is तेरा about वापस the time they finally चल भाई तू यहाँ से जा, around 2008-9 के आसपास. That was wow दोस्तों, that was our. Do we have any updates from the ground? I want to see. अभी तो नहीं एक वही घंटे के inspection, inspection, 40 मिनट के inspection. बाद this is going to be inspection Inspection. चलिए, very only 5 odd minutes left because I think this show can go on, but we're only paid to sit for a certain time. और ये match भी नहीं होगा तो let's get into the final section. It's called predictionary, where we predict क्या होगा. I think most of us will go for Ravina Tandon. I mean the rain, but let's see what happens. Predictionary, just to let you know पंकज, पहले जो हमारा T20 अड्डा शो था, me, Manvinder Bisla and Saurabh, we all gave our guess. I was very close. कल का match was not that close, but the closest was in fact Saurabh. He said India will get to 183, they got to 179, and he said Holland would get 135. They didn't get close, but हमारे जो guess थे, he was the closest. So well done Saurabh. I said 205 and Manvinder said 200, but it was 179. Well done, Saurabh Pant. और इसके लिए मुझे मिलते हैं 10% shares at glance so thank you so much for that offer glance for forwarding that to me it's very nice of you मेरे सीए के साथ जरूर बात कर लेना and I look forward to your investments चलिए, तो आज का predictionary, I'm not asking for how many mm of rain, I'm not asking for precipitation. अगर मैच हुआ था, टॉस तो नहीं है. Let's say if Australia bats, how much would Australia? Let's do this. टॉस नहीं हुआ, शो खत्म होने वाला है. If Australia bat and it's a 10 to 12 over match, how much would they score? And the same for England. Pankaj, you go. Australia will probably make 113 runs, Okay. and England would be out on 97. oh wow 130 and 97 is Pankaj. ठीक है. That's in favor of Australia. If England bat first, England bat first, तो वही होगा नहीं हाँ England bat first तो probably 105 England and Australia all out on 85. oh but सटीक. चलिए, you know, Jamie, I'm known for my precision. Like Swiss watches are timed at my timing. तो मैं तो ये बोलूँगा कि I'll give exact predictions now. Okay, I think 7 ओवर का मैच होगा. Okay. ठीक है, and I think England will bat first, I and put it England down. will score 82, and Australia will be 79 for 4. ये मेरी prediction है. Wow. 79 for 4. बहुत ही सटीक, confident. Okay. What I about want to you? say, I want to say Rain's going to be doing the whole thing, but क्योंकि हमें कुछ prediction नहीं तो डालना है. Look again, my thing is overs कितने होंगे ना, सवाल ये है. I still think we could get 10 to 12, but you're saying 7. I'm going to go with 10 overs. England 103, and Australia, they won't lose wickets, but they'll come very close, like maybe 98 types. Let's say that. I don't know. But gut feel कह रहा है, tone feel कह रहा है कि बारिश ही होगा आखिर. हाँ I like doing these precise predictions because एक बार में मतलब मैं 1000 बार ऐसा बोल दूंगा एक बार भी सही आ जाए ना oh my god ये फिर मेरा क्रिकेट एनालिस्ट का करियर चालू हो जाएगा फिर मैं Same, लाइक that day I भाई was so happy. ये मेरा एक नंबर स्ट्राइक ला आया, पता नहीं कैसे, तुक्का. Yeah, there's no. I'm just seeing the updates. Absolutely, there's no chance of a start on time. We're probably playing the waiting game, and it's समय की बात है. We'll get that flash or that SMS के भाई match नहीं होने वाला है.
But because we have to go, acha, one of the covers is being peeled back. Not enough for us to stay on and talk too much longer. But because बारिश का चांस है, आप दोनों मुंबई में बैठे हो जहाँ पे बारिश बहुत होती है. I want your favorite Hindi film rain song from both of you. तो Quite मेरा था, interesting, Saurabh. आई लेट पंकज गो। हाँ पंकज आप बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, मैंने तो वो टिप टिप बरसा पानी पहले बोल दिया था, बट मे बी रेन इज फॉलिंग झमा झम झम, नो लड़की ने आंख मारी लुट गए हम, मे बी सम Anumalik. मे बी दैट सॉन्ग। इट्स गिर गए हम, आई एम सॉरी पंकज, इट्स गिर गिर गए गए हम, हम। या यू नो, छोड़ो यार, रियली प्यार में लुटना डिसअपॉइंटेड, रियली गिरना सब कुछ हो ही डिसअपॉइंटेड। रहा है, एक बार आंख हुई तो मारे। बहुत खूब, बहुत खूब. बताइए सौरभ. You know, my favorite rain song is very weird. I don't know if you remember the song जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित are singing a song called Batata Vada. I don't know why I ये love that song बटाटा very much. वड़ा, बटाटा वड़ा दिल दिल नहीं नहीं चा, वाह वाह वाह, देना पड़ा। वाह 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 What a वाह। great song, and it's such a great, fantastic, great song to listen to because then you are eating vada pav, batata vada, and listen to it. It's great. So yeah, that's the one. What about you, Good Jamie? choice. I'm sure not many people would even have that in their top 10, but that's a Yeah. very, very interesting. टॉप 10, माइनस वाला टॉप 10 में भी शायद Top, होगा कि नहीं। top 25 also. Well, Jamie, what's yours? मैं अगर बिना पूछे बता दूं, I'm going to go with that ultimate innuendo double meaning song. आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी बस. ओहो, Because Right. that song, the film had no connection to what's happening in that song. And why is Sanju Baba is doing all this kung fu and Nagma's dancing? It's like, mudde pe aa jao. But what a peak early 90s rain song. But if that song was an innuendo, maybe that's what they asked him. They're like, "Bhai, tu karta kya hai when you are actually doing such activities?" And he's like, "Kung fu is what I do." And people are like, "Okay, man, such whatever gets you happy." वही अरे वही. मैं क्या किया? That's his plan. Baba, Yeah. Baba. Chalo, yeah, guys, absolute pleasure. Saurabh, once again, thank you. Pankaj, good to see you. I know you'll be back a few more times on T20 Adda. Pata nahi aaj kya hoga, but we have a weekend to look forward to. Some big matches, and of course, Sunday is another India. The match which I think this whole group is going to hinge on, India, South Africa, Perth. We'll see you all then. Thank you to all our viewers. Enjoy your weekend. Goodbye, everyone. Goodbye, everyone. Nice meeting you, Pankaj. बाय, Bye, Jamie. See you all. बाय Goodbye. सौरभ, बाय जेमी, थैंक यू। Bada, bada. दिल नहीं चाहता। अपन show करेंगे on this song, Pankaj. See you. या Bye, bye, bye. बाय।